that has been given to you. You didn't come here, any of you, none of you came here arrogantly. आप हिंदुस्तान से अहंकार नहीं लाए. You came here with limited means and you built something fantastic, something wonderful. And all of you have different journeys, none more or less important than the other. The other thing that you did was accepted the culture of the United States, the language of the United States, the history of the United States, the diverse religions of the United States. You did not come here and fight or abuse the culture, the religion, the history of the United States. So for us, you and millions of you, millions like you, are ambassadors, people who represent our country and people who represent a particular view of our country. Because as you know, there is a fight going on back home. A fight between two ideologies, one that we represent, and the other, of course, that the BJP and the RSS represents. I think the simplest way to describe this fight is on one side you have Mahatma Gandhi, and on the other side you have Nathuram Godse. That's the best, most precise way. Most precise way that I can say it. On one side, a brave man, NRI like you. In fact, probably the most impactful NRI that India has had in many, many years. Humble man, simple man, but a man who believed in the future, who believed in India, propagated non-violence, and searched for the truth. That's the ideology that we follow. That's the ideology that all of you follow in this room. And then on the other side, Nathuram Godse, violent, angry, unable to face the reality of his own life. You see, the reason he shot Gandhi was that he could not face his own life. And so he had to take his anger out on somebody. And he chose to take his anger out on the essence, on the man who represented the essence of India. So that is the fight. Gandhiji was forward-looking, modern, open-minded. Godse only spoke of the past. He never spoke of the future, only spoke of the past. He was angry, hateful, and frankly, he was scared. At the heart, he was a coward. Right? And he was unable to deal with his life. On the other hand, Gandhiji faced the biggest force on the planet, a superpower,
more powerful than the United States is today. And he faced it because he followed the truth and he was humble. And you're all following in the footsteps of Mahatma Gandhi, Ambedkar ji, Sardar Patel ji, Jawaharlal Nehru. This is who you learn from. And this is who you represent. And I can go back in history. If we want to talk about humility, I can go back. I don't need to stop at Mahatma Gandhi, because Mahatma Gandhi also learned from some other people. It is not that Mahatma Gandhi ji was the person who invented this. Before Mahatma Gandhi, if there are friends here from Karnataka, there is Basavana. If there are friends here from Kerala, there is Narayana Guru. If there are friends here from Punjab, there is Guru Nanak ji. There is Buddha. There is a list of people. I mentioned Dr. Ambedkar. Jai Bhim. Right? And so there's a long list. And if you look at the essence of all these people, you take any one of them, you take Ambedkar ji, you take Mahatma Gandhi, you take Guru Nanak ji, all the giants that have emerged from India, you can see that there are certain qualities that all of them have. First of all, and most important, they search for and represent and fight for the truth. Ambedkar ji fought for the truth of what Dalits in India were facing. And the second thing is, all these people are humble. There is no arrogance to be found in these people. And that is how you have worked in the United States. That's why you're successful. Everybody says, oh, the Indian community is so successful, Indian community is so intelligent. No. The reason the Indian community is successful here is because the Indian community has respected the United States, the people of the United States, the customs of the United States, and has embraced them. You have embraced the United States. You've embraced the people of the United States. That is the heart of your success. So I commend you for that. I respect you for that, and I honor you for that. Now, back home we have a problem. And I will tell you the problem. Simple. BJP and the RSS are incapable of looking at the future. They are incapable. उनसे आप कुछ भी पूछो, वो पीछे की ओर देखते हैं. उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया. भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया. It is immediate, their immediate response, भैया पीछे देखो. Now, you think about it. All of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 घंटा, when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने. Right? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror.
And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers. You listen to the Prime Minister. You will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. So, I remember a train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility that the train has crashed, I am resigning. Right? So this is the problem that we have back home. That we make excuses and we are not accepting the reality we're faced with. The reality we're faced with is our unemployment numbers and the fact that we need to make sure that all our youngsters are productive and get a job. And I believe, and one of the reasons I have come here is because I believe that if we want to build an India where the vast majority of our youngsters are employed, one of the things we have to think about is the bridge between India and the United States. What does it look like? What does our partnership focus on? And how do we compete with the challenge the Chinese have placed on the table? What is our view on the revolution in mobility? What is our view on the revolution on data and connectivity? And what is our view on the transformation that is taking place in the energy system of the world? These are the things that we should be discussing. And this is what... Namaskar. Have a nice day. So, देखिए ना, you have to understand, this is Congress party's power. This is Congress party's power. We are ready to, we are not being violent, we are not being aggressive. Right? We are not being nasty. That is our strength. Am I not right? Did we shout at him and say, no? No, we didn't. We will not change our behavior. We will not change our behavior. Because you cannot, the thing is you cannot, please understand, you cannot cut hatred with hatred. It's impossible. Right? It is impossible to do. I'm not interested in trying to cut hatred with hatred. मैंने बोला था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. आपका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है. हम आपके लिए आपका काम थोड़ी करेंगे, हम तो अपना काम करेंगे. Right? So that is what we have to work on. There is a challenge in India. There is an attack on the democratic structure of our country. Full-scale attack on our institutions, on our judiciary, on our media, and it is your responsibility and our responsibility to defend the idea of India. And the idea of India, the central piece of the idea of India,
is our constitution and our democracy. Modern India cannot exist without our constitution and without our democracy. Right? So, what excites me in this type of a meeting, that I come here and I see people, thousands and thousands of people, who believe in the idea of India, who believe in the democratic principles of our country, who believe in the constitution, who believe that we should be affectionate to each other, that we should love each other. And I must tell you, it gives me tremendous strength when I see you, and I see the way you behave, and I see the way you act. Because in each of your hearts, there is India. आप ले घूमते हो, आप 24 घंटे अपने दिल में हिंदुस्तान को लिए घूमते हो, राइट? एंड वो कौन सा हिंदुस्तान लिए घूमते हो? वो मोहब्बत वाला हिंदुस्तान, एक दूसरे की इज्जत करने वाला, एक दूसरे की मदद करने वाला, गले लगने वाला हिंदुस्तान आप लिए घूमते हो 24 घंटा. मैंने देखा है, इसी ट्रिप पे मैंने देखा. You see a person from another culture, you'll help them immediately. You'll not ask, Acha, what religion are you? What community are you from? What are you wearing? No. You'll say, if you need my help, I don't care which religion you're from. I'm Indian and I'm going to help you. So, to be nasty to people, to be arrogant, to be violent, these are not Indian values. They're simply not Indian values. If they were Indian values, why would we be celebrating Mahatma Gandhi, Guru Nanak, Ambedkar, Basavana, Narayana Guru? Why? Because they represented the values that we appreciate. We celebrate them because we believe in what they said. And so this is a new fashion that has come. That to express Indianness, you have to be hateful. To express Indianness, you have to be abusive. To express Indianness, you have to beat people. No, that's not Indianness. That's something else. And we refuse to accept that as Indian. Right? So that's the message I want to leave you with. I have one thing, Sam, that I was thinking. Now, I've come to New York. We were in California. But there's a lot of diaspora people living in different parts of the United States. And I think the next time I come, you must take me to some other cities. You know? Maybe Chicago, Dallas, Atlanta. Right? Yeah, because my intention is to build a relationship with you. My intention is to have a relationship with you, a affectionate, loving relationship with you, where you can say to me that, Rahul, this is what we think. Rahul, this is how you should think about the relationship with the United States. This is what is important. This is what we need to focus on. I'm not interested so much in telling you what I believe. I don't want to do Man Ki Baat over here. Right? I am interested in आपके मन में क्या है.
I am interested not in looking at the rear view mirror, but looking in front and saying, brothers and sisters, how do we move forward effectively? And how as a country do we spread affection, love and affection? How are we kind to people? That's what I am interested in. And that's the knowledge that you have. There's huge talent in all of you. Today, just in the last meeting, a young girl came up to me and she said, Rahul ji, there's so much I want to do for my country. I'm a Stanford graduate. But you know, I don't like the atmosphere back home. I don't like the anger, the hatred that has been spread back home. I'm concerned about going back as a young girl. That's not the India we want. The India we want is where this young lady says, I want to go back home because there's love, affection, peace, harmony in my country. And the talent, look, the central architect of modern India was an NRI. Mahatma Gandhi was an NRI. The freedom movement of India, we might not like to say this, the freedom movement of India began in South Africa. Right? And you can see all our leaders in the freedom movement. My great-grandfather, Nehru ji, NRI. Ambedkar ji, NRI. Sardar Patel, NRI. Subhash Chandra Bose, NRI. All of them NRIs. Right? And people who had an open mind to the outside world, who came to England in those days, came to America and said, these are interesting ideas we need to take back home. Right? So that's what I expect from you. You are the, I would say, the next generation, future generation Mahatma Gandhis. Future generation Ambedkars. Future generation Sardar Patels. And your role is to take your talent, immense talent. Maybe sometimes my criticism of you might be that you even underestimate what talent you have. Maybe that I can say. That you don't even understand the level of talent that you have and the capability that you have. And that is what you have to bring to play. You can do it in America. You can do it back home. You can do it building a bridge between America and India. So that is what I wanted to tell you. I am at your service. I love all of you. I love all of you. I love what you do. Yeah. अच्छा, can I ask you a question? छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं. आपने बीजेपी के मीटिंग में कभी आई लव यू सुना है? कभी सुना है? कांग्रेस के लोग एक दूसरे बात करते हैं, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर. तो ये हिंदुस्तान है. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. थैंक यू. मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं. सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं,
अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है, और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। अब आप सवाल पूछिए। एक एक करके प्लीज। हाँ मोहित, I'll say it in English also. सॉरी, I'll say it in English also. The question begins few weeks back in Parliament, where I asked the Prime Minister a very specific set of questions. Question number 1, 20,000 crore rupees or $3 billion are in shell companies owned by Mr. Adani. Mr. Adani could not have generated this money. He's an infrastructure business. Where did this money come from? Whose money is it? That was the first question. Whose shell companies are there? These companies are working in the defense field. Why does nobody know whose money this is? There is a Chinese national involved in this. Why is nobody asking the question, who is this Chinese national? That was the first question. Second question was set of questions with proof.
were what is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani. I showed a picture of the Prime Minister and Mr. Adani's plane relaxing. I gave documentation about the defense industry, about the airports, about statements made in Sri Lanka, about statements made in Bangladesh, pictures of Mr. Narendra Modi sitting with the State Bank chairman in Australia. And I put this proof on the table. Immediately after that, the BJP started its work. My speech was expunged. I wrote a letter to the Speaker with a detailed explanation on the defense industry, on the airports, with press clippings, supporting documents, legal documents, and said, this is the supporting foundation of my speech. I have not made this speech, I have not invented this. This is detailed research, here it is. Nothing happened. Nothing was revoked. My speech today is not part of the record of Parliament. The same, by the way, was done with Mr. Kharge. After that, BJP ministers lied about me in Parliament. They made the statement to distract from the Adani issue. The whole game, disqualification, and all these statements are to distract from the central question, whose money is it? 20,000 crores, whose is it? Kiska hai ye? That's the main question. The whole thing is to distract. So, they said that I've asked foreign forces to help India. Most ridiculous statement. I have never made such a statement. You can look at all the conversations I had in the United Kingdom. Not one such statement was made. In fact, I said this is India's problem. India has to resolve this problem, right? A minister lies on the floor of the House. I wrote to the Speaker and I said, Speaker, sir, it is my right as a member of Parliament, when somebody makes an accusation, to state my position. Please let me state my position. The first letter is not answered. I then write a second letter with more details, saying the names and what was said. Still no answer. I then go to the Speaker's chamber and I say, Speaker, sir, what is going on? We live in a democracy. You are the defender of that democracy. Why are you not letting me make my statement? The Speaker smiles and says, I cannot do that. Come and have a cup of tea with me. Right? So this is the whole drama that is being orchestrated to defend the Prime Minister from the simple question, whose 20,000 crore rupees, whose $3 billion went to Mr. Adani shell companies? हाँ जी मोहित, एक मिनट सबको मौका मिलेगा. राहुल जी, मोहित दुबे हूं मैं. मेरा सवाल ये है कि आप शहीदों. By the way, sorry, I just need to finish that. I left out a part. Look, I am here defending the democratic voice of the Indian people. I will continue to do that. I am not scared of these threats, of these disqualifications, of these allegations, of these prison sentences. I don't care. I'm not scared of them. Okay? These people don't understand me yet. I am not scared of them. They are used to everybody being scared of them. I am not scared of them. Right? And I will continue to ask the question, what is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? It is an old relationship. It is a relationship that began when he was Chief Minister of Gujarat. Mr. Adani constructed the idea of resurgent Gujarat, organized all that. This is a partnership. It's a close partnership. I'm going to keep asking that question. राहुल जी, मैं मोहित दुबे हूं. मेरा सवाल यह है कि आप शहीदों के परिवार से आते हैं. आपकी दादी भी डिस्क्वालीफाई हुई, जनता के बीच गई, आप सत्ता में वापस आए. आज के दौर में राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं क्योंकि तमाम आपने इश्यूज को उठाया, चीन के इश्यूज को उठाया. क्या राहुल गांधी भी जनता के बीच में जाएंगे और वही वापसी फिर से करेंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 4.5 महीने जनता के बीच में रहेंगे और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा. हाँ जी अनवर. आज के हिंदुस्तान में
जो पहले राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलती थी, मीडिया से मिलती थी, बाकी इंस्टीट्यूशन से मिलती थी, वो नहीं मिलती है। तो ऑपोजिशन की पार्टीज को एक ही रास्ता है, जनता के बीच में जाने का। हाँ जी अनवर। सर, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगाया है, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? संजय मिश्रा। और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता। संजय मिश्रा। आपने कहा आप डरते नहीं हैं, लेकिन स्टेट के टारगेट पे हैं और स्टेट आपके खिलाफ है, पूरी स्टेट, पूरी मशीनरी आपके खिलाफ है। ऐसे में आपके सामने चैलेंजेस बहुत बड़ा है, तो रास्ता क्या है, रणनीति क्या है? देखिए भैया, चाहे स्टेट हो चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं, मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है। शांत हो जाइए। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है, इसलिए मैं ये करता हूं। हाँ सुप्रिया। सर, राहुल सर, बीजेपी के जो लीडर्स आप पे अटैक कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? और इसके अलावा वायनाड, वहां पर जब से खबर गई है, वहां पे लोग बहुत डिसबिलीफ में हैं, प्रोटेस्ट भी इरप्ट हो रहा है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने सोचा है कि मैं अपनी, देखिए मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बोला कि वायनाड के लोगों के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, फैमिली प्यार का रिश्ता है। तो मैंने सोचा कि मैं वायनाड के लोगों के लिए अपनी एक चिट्ठी लिखूं उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है। तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। उनका, देखिए, बीजेपी के नेताओं का काम यही है। देखिए, वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं, कारण आप जानते हो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए ध्यान हटाना है। वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे। मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए किसका है? हाँ जैनेंद्र। राहुल जी, पूरी कांग्रेस पार्टी, सर पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप चाहे वो गुजरात की कोर्ट ने आपको सजा सुनाई या आपका निलंबन हुआ, ये सब कुछ केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री के इशारे पर हो रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून ने अपना काम किया है। तो जो ये दलील है कि कानून ने आपको सजा दी है और उसी की वजह से आपका निलंबन भी हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लीगल मैटर है, पर ये हुआ है। लीगल मैटर है। मैं हिंदुस्तान के लीगल सिस्टम को रिस्पेक्ट करता हूं। मैं लीगल मैटर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहता हूं। हाँ संजीव। अगर आपके लीगल सवाल होंगे तो आप हमारी लीगल टीम से पूछ लीजिए। संजीव, 1 मिनट संजीव। No, look, please understand why I have been disqualified.
I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why, first the distraction, now the disqualification. Please don't be confused about this matter. There is a deep relationship between Narendra Modi ji and Mr. Adani. There is a question. 20,000 crore rupees have suddenly arrived in Mr. Adani's shell companies. Where has this money come from? Whose money is it? It is, some of these companies are defense companies. Why is the defense ministry not asking this question? Why is the defense ministry not asking the question? But please explain to us, whose money is this that is being spent on our drone development, that is being spent on our missile development, that is being spent on our ordnance production? Why is the defense ministry not asking this question? मंजरी प्लीज एक मिनट मंजरी रद्द हुई तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल जो अभी तक कांग्रेस से दूरी बना के चलते थे वो भी आपके समर्थन में आए। तो आपको क्या लगता है अब वो समय आ गया है जब सारे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए? मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। रंजीता जिस बयान को लेकर आपको ये सजा सुनाई गई है, क्या आपको लगता है, आपको अफसोस है उस बयान को लेकर? क्या कहेंगे उस बयान पर? अब देखिए, अब ये लीगल डिस्कशन है, उस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये कोर्ट में मामला है। मगर मैं जो भी सवाल उठाता हूं वो सोच समझ के उठाता हूं। हाँ जी, नीरज। राहुल जी अभी कुछ ही दिन पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता गई थी और बाद में हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था। अभी उनकी मेंबरशिप रीइंस्टेट नहीं हुई है। तो सुन लीजिए। हाँ। राहुल जी सुन लीजिए, अभी उनकी सदस्यता रीइंस्टेट नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करने के बाद उसे रोक दिया था। अगर ऊपरी अदालत से आपको स्टे मिलता है तो आपको उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर भी आपकी सदस्यता को बहाल कर देंगे? मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। आपके लिए नहीं, अपने लिए। रवि एक मिनट रमन। हाँ। एक मिनट रमन। इट इज नॉट अप टू मी, इट इज अप टू कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन जाएंगे। राहुल जी मेरा सवाल आपके यहाँ बैठे हैं। हाँ। दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिश्ता है, उनके साथ लेन देन का मामला, उसका कहा धंधे का मामला है। लेकिन क्या धंधे का मामला क्या बात कर रहे हैं? ये धंधा रोकेंगे ये लोग? जिनके पास जो भी स्टेट का उनके साथ नाता है, जो भी बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस रोका जाएगा क्या? देखिए, सिंपल सी बात है, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए? आप इंक्वायरी कीजिए। अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए। अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। हाँ सिद्धार्थ सर, राहुल सर प्लीज। मैडम एक मिनट। मैडम आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। राहुल जी क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है
कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए। राहुल जी, सिद्धार्थ, राहुल जी, मेरा सवाल आपसे सिद्धार्थ। ये है कि जब आप ये फैसला सामने आया, आपको मैक्सिमम पनिशमेंट जो है इसमें जो हो सकती है वो आपके लिए मुकर्रर की गई। इस बीच कई लोगों ने ये भी कहा, आपके पार्टी के भी एक सांसद ने कहा कि कम से कम जज को ये देखना चाहिए था कि सामने जो शख्स है वो एक गांधी परिवार से आता है। इस पर आप क्या कहेंगे और आपको लगता है मैक्सिमम पनिशमेंट जो है आपके केस में, मैक्सिमम पनिशमेंट आपके लिए मुकर्रर की गई, क्या आपको इसके पीछे क्या कहना है आपका? वही मैंने कहा, अगर डिस्ट्रैक्शन करना है, मैक्सिमम पनिशमेंट की तो जरूरत है। मिनिमम पनिशमेंट से बात थोड़ी बनेगी। मैं तो सोच रहा था भैया 5 साल होते, 7 साल होते, 10 साल होते, वो भी मिल जाता। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार राजदीप, I have only one step, and that step is to fight for the truth in this country and to defend the democratic nature of this country that is under brute. Please let me finish, Rajdeep, unless you want to answer it for me. You do that also sometimes. Yeah. So my job, as I see it, is to defend the democratic nature of this country. And I will do whatever I have to do to defend the democratic nature of this country. What does that mean? That means defending the institutions of this country. That means defending the voice of the poor people of this country. That means telling the people of this country the truth about people like Mr. Adani, who are basically exploiting the relationship they have with the Prime Minister. Yeah, Pallavi, please 1 second, let's go. Look, see, these are legal matters. It makes me no difference. I told them, it makes me no difference if I'm disqualified, not qualified, whatever. It makes me no difference. Disqualify me for life. Put me inside jail. I will keep going. I will not stop. Mr. Gandhi, Yeah, Mr. Pallavi. Gandhi, 2 things here. One, are you worried or apprehensive about the political relevance of, say, the opposition and the Congress Do I look party worried to post? you? One. Second, Do I look worried to you? I'm excited. I'm happy that these people have given me the best gift they could give me. And second, Mr. Gandhi, is that BJP's reaction since yesterday is that if you hadn't torn the ordinance then perhaps you wouldn't be facing the law today. Your response to that? My response to that is that when somebody is guilty of something, they want to distract everybody's attention. Right? If you catch a thief, the first thing he says is, I didn't do it. The second thing he says, look there, look there, look there, look there. Right? That's what the BJP is doing. We have caught 20,000 crore rupees entering Mr. Adani's companies. Nobody knows whose money that is. That money cannot be Mr. Adani's money. He does not generate this type of money. So that money has come from someone. All this, OBC, disqualification, anti-national, all this is to distract from the panic that the Prime Minister is feeling. That his relationship with Mr. Adani is going to be exposed. Let me tell you, that relationship is going to be exposed. Nobody is going to stop that. It is going to happen. Because the opposition is going to press this thing until we find the answer. हाँ रवि, सिसोदिया जी को दे दो।
राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं। घूम घाम, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a press man. विक्रांत, राहुल जी हवा निकल गई। राहुल जी, बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते, अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि आप माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस में, कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें भी कही जिसके ऊपर बीजेपी को भी उनका समर्थन करना चाहिए। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर उन्होंने मोदी सरकार की काफी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी जिस तरह से पक्ष लिए, मोदी ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों के दबाव में ना आकर के तटस्थ फैसला लिया है, तटस्थ रहने का रूस यूक्रेन के मुद्दे पर। यह भारत की यूपीए सरकार यदि होती इस समय, तो यूपीए सरकार का भी यही रवैया होता, यही स्टैंड होता। लेखक और कवि की कभी भी यह मर्यादा नहीं होती है कि आप शब्दों की गरिमा को लांघ जाएं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी इस वक्त लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि राहुल गांधी का एक बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बीच खलबली पैदा कर देता है। और अब तो राहुल गांधी अमेरिका के 10 दिवसीय दौरे पर है और ऐसे में राहुल गांधी के बयानों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब बयानबाजी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी खामोश रहे, ये तो नामुमकिन है। और अब यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयानों का असर कुछ ऐसा होता हुआ भारतीय जनता पार्टी पर दिखाई दे रहा है कि जहां एक और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सरकार 4 महीनों से चुप्पी साधे हुए थी, लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह पर सरकार कमान, यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनकी कमान कसने पर मजबूर होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जिस तरह से अपनी सांसदी रद्द होने को लेकर विदेश में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी के नेता दिवालियापन कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी क्या पागल हो गए हैं? यह हमारा कहना नहीं है, यह उनके परिवार का या उनके करीबियों का कहना नहीं है, बल्कि यह कहना है मशहूर एक्टर और साथ ही
थी भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें वो सीधे सीधे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें तो बड़ी खुशी होती है कि उनका एंटरटेनमेंट राहुल गांधी कर रहे हैं। तो क्या वाकई में जो सीरियस मुद्दे जो वाकई में आम जनता से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में राहुल गांधी खुलकर बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक एंटरटेनमेंट का तरीका है? इन्हीं तमाम सवालों पे आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं और साथ ही आपको वो बयान भी सुनवाएंगे जिसे सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो तिलमिला उठे हैं। देखिए, यहाँ पर सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बेहद ही खास सहयोगी सिद्धांत। सिद्धांत, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। देखिए सिद्धांत, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे हैं और कई ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि विपक्षी दल के वो नेता जो राजनीतिक मंच पे एक साथ नजर नहीं आते, लेकिन वो भी राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। बात अरविंद केजरीवाल की करें, बसपा सुप्रीमो मायावती की करें, अखिलेश यादव की करें या ममता बनर्जी की, लेकिन राहुल गांधी के बयानों से भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने तिलमिला उठे हैं कि उन्हें पागल, दिवालिया, बेवकूफ, पप्पू, इन तमाम नामों से उन्हें पुकारा जा चुका है। तो इन तमाम बातों को लेकर के आपकी क्या राय है कि राहुल गांधी को सच बोलने पर जिस तरह की उपाधियां दी जा रही हैं, इन्हें किस तरह से आप देख रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से राहुल गांधी अपने अमेरिकी दौरे पर हैं, उन्होंने कई सारी बातें उन्होंने अपने दौरे के दौरान कही है और उन्होंने कई सारे मंचों का जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। सबसे पहली बात तो मैं मनोज तिवारी के कल के जो भाषण थे, मैं उनके भाषण के बारे में कहना चाहूँगा कि मनोज तिवारी का यह भाषण अगर एक तरीके से देखें तो मनोज तिवारी न केवल एक फिल्मी कलाकार होने के अलावा भी एक कवि और लेखक भी रह चुके हैं। विपुल, वो अपने नामों के आगे मनोज तिवारी विपुल लिखते हैं, उनका एक कवि के तौर पर उनका एक नाम जाना जाता है। शब्दों की मर्यादा सबसे बड़ी बात होती है कि यदि आप किसी नेता के राजनीतिक बैकग्राउंड से, राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं है तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र में अधिकार है और एक विपक्षी पार्टी होने के नाते, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी पार्टी होने के नाते ये उनका हक अधिकार भी बनता है कि वह राहुल गांधी की विचारधारा का विरोध करें और जहां तक हो आप अपने जो है उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप पर, जाहिर सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी नेता को जिसके पीछे जिसके कितने बड़े ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जो हर एक तरह से अपने साथ एक अलग आयाम से सोचने की ताकत रखता है, आप उसके बारे में कहते हैं कि वो मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन खोज सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक लोकतांत्रिक देश में एक हेल्दी राजनीति, एक स्वस्थ राजनीति की पहचान है। और दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि राहुल गांधी लगातार हमलावर रहे हैं, तो राहुल गांधी अमेरिका में उन्होंने, हालांकि मैं ये बात नहीं कहता, मैं मिले जुले रवैये के साथ मैं कहूंगा क्योंकि मैं निष्पक्ष होकर के मैं सोचता हूं कि मैं इस मुद्दे को एक अलग नजरिए से देखता हूं। मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें कही जो वास्तव में मुझे लगता है आपत्तिजनक थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें भी कही जिसके ऊपर बीजेपी को भी उनका समर्थन करना चाहिए। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर उन्होंने मोदी सरकार की काफी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी जिस तरह से पक्ष लिए, मोदी ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों के दबाव में ना आकर के तटस्थ फैसला लिया है, तटस्थ रहने का रूस यूक्रेन के मुद्दे पर, यह भारत की यूपीए सरकार यदि होती इस समय तो यूपीए सरकार का भी यही रवैया होता, यही स्टैंड होता। इसके अलावा अगर बात करें, आज तो सैम पित्रोदा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी न केवल एक छोटे से देश के प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि वे 1.50 करोड़, मतलब कि 150 करोड़ जनसंख्या के प्रधानमंत्री है। उन्हें हर एक मंच पर, हर एक मुद्दे पर समान अधिकार और सम्मान का पूरा हक है। तो जाहिर सी बात है कि राहुल ने भले ही कुछ बातें कही हो जो भाजपा की राजनीतिक विचारधारा के लिए गलत हो, और कुछ बातों पर उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर भी उन्होंने कुछ कुठाराघात किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि राहुल गांधी ने हर एक तथ्य में, अगर राहुल गांधी को आप पागल कह सकते हैं, आप दिवालिया कह सकते हैं, मानसिक सोचने की क्षमता उनके अगर खो गई है, तो ये बात सरासर गलत है। मैं मनोज तिवारी को, खास करके उस मनोज तिवारी को भी जानता हूं जो एक राजनीतिक पार्टी से हटने के अलावा एक लेखक और कवि भी है। लेखक और कवि की कभी भी यह मर्यादा नहीं होती है कि आप शब्दों की गरिमा को लांघ जाएं और आप किसी पार्टी के समर्थक, किसी पार्टी के नेता के प्रति ऐसे शब्द कह दें जो कि राजनीतिक रूप से तो क्या, भाषाई तौर पर असंवैधानिक हो। जी बिल्कुल, देखिए सिद्धांत ने यहाँ पर काफी सही बात बोली है और वाकई में मनोज तिवारी की अगर बात करें तो उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि उनकी वैसे भी काफी ज्यादा कह सकते हैं कि पहचान है और आम जनता उन्हें काफी ज्यादा मानती है। लेकिन ये वही मनोज तिवारी हैं जो राहुल गांधी अमेरिका में क्या बोल रहे हैं उस पर उनके पास बयान देने का वक्त है।